Hi everyone. A very good morning to all of you. Welcome back to our session of daily current affairs. We've already discussed about this quote yesterday. So let's just start with today's session. Let's see what do we have here, national, international events. So we'll discuss it tomorrow. See, it is not always easy to cover all of the important, events at one single session. So always remember that whatever I teach you, whatever current affair topics that we learn together, they are on a deferred basis. All right, maybe someday the topics from economy might be more, and someday the topics from national and international news might be more. So that is how it actually works, and I don't think so it's really that bad, because that way you will also keep revising everything that you read. So let's see which bank has issued the highest number of credit cards. तो अभी RBI का एक report आया था that there has been a multi-fold increase in the number of credit cards issued by banks on a year-on-year basis and even on a month-on-month basis. अभी हाईएस्ट इशूअर अकॉर्डिंग टू आरबीआई सर्वे, आरबीआई ने अभी बैन लगाए थे एचडीएफसी बैंक में, एंड आफ्टर लिफ्टिंग दैट बैन ऑन इशूइंग ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, नाउ एचडीएफसी बैंक हैज़ अगेन regained its first position of being the top issuer of credit cards in India at with the number being at 1.72 crore. Okay. So why there has been a sudden surge in credit card? इतना ज़्यादा increase क्यों हुआ है? Well, that is because of the rise in the transactions, rise in the e-commerce transactions in our country. Alright, so all these things, credit culture is increasing. हम लोग बार बार report पढ़ रहे हैं that domestic demand is on the rise because the economy is also recovering after the pandemic, because despite the inflationary trends there has been a magnanimous rise in urban and rural demand. So that is why at the same time, with the increase in demand, increase in e-commerce has also, the magnitude of e-commerce transactions have also increased, and that is why the credit cards and financial products that offer you easy credit, for example, you want to buy something, you use lazy pay and easy pay, all these instruments are what? These are actually a type of credit card only. So yes, HDFC Bank, then followed by ICICI Bank, then followed by SBI Bank. These are the top 3 issuers of credit cards in our country. Okay, let's have a better look at the statistics. 1.7 million new credit cards were added to the banking system. HDFC सबसे ज़्यादा credit card issue कर रहा है, उसके बाद है SBI बैंक and उसके बाद है ICICI बैंक. Okay, so remember HDFC is the top issuer, second is third ICICI. However, hi, good morning Mohit. However, this information can vary and change on a month-to-month basis, because the number of cards issued by each bank, they can fluctuate greatly on a month-over-month basis. As you can see here, 118% year-on-year increase by 8%. हर महीने 8% का क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ के it has accumulated to increase by a total of 118% on a year-on-year basis. And top categories that require credit are travel, tourism, discretionary items and all that stuff. Alright, according to RBI data, credit card spending is 1.13 lakh crore. 1.13 lakh crore RBI के डेटा के हिसाब से टोटल क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है, विथ 7.8% हायर देन 1.05 lakh crore. Okay, we have already done that, I guess. So पद्मा ऑटो पे क्या है? पद्मा ऑटो पे अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने inaugurate किया था. It has been recently launched by the Ministry of Defense, and it is an automatic payment system. What is an automatic payment system? जैसे आपको किसी का बिल पे करना है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू
pay off your electricity dues. So you will opt for an automatic payment system with your bank. You will ask your bank to directly credit that amount from your account and pay your dues for the electricity bill. So now this is not from a citizen to government, but government to citizen service, Padma automatic payment system. Now the government will credit that amount directly to the bank account of the beneficiary. Alright, so it is a form of a direct benefit transfer. तो बैंक अकाउंट पे डायरेक्टली मनी कैसे क्रेडिट होता है? Of course using online payment methods, Bheem, UPI, right? But also you also have, how do you get your salaries? You get through NEFT, through RTGS that are controlled by the RBI. Both are controlled by the RBI. Okay, तो ये क्या है? Is it a transfer of pension scheme? It is a digital literacy financial inclusion scheme. Or is it a seamless dispersal of pay and allowances? So जहाँ आपने automatic pay module समझ लिया, आप okay, जहाँ पे आपने, thanks मोहित, anyway, so जहाँ पे आपने ये समझ लिया कि ऑटोमेटेड पे मॉड्यूल क्या होता है, राइट? ऑटोमेटेड पे मॉड्यूल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू कैच द कॉन्सेप्ट कि क्यों, किस पर्पस से ये लॉन्च किया गया. सो द पर्पस फॉर दिस इज सीमलेस डिस्पोजल ऑफ पे एंड अलाउंसेस. एज द नेम सजेस्ट यार, कभी कभी आपको कॉमन सेंस यूज करना होता है टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो इन द क्वेश्चन हैज ऑटोमेटेड पे मॉड्यूल, राइट? इट हैज़ अ पे मॉड्यूल. जब पे मॉड्यूल वर्ड यूज हो रहा है तो यहाँ पे पेंशन का कोई स्कोप नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसफ़र, इट इज़ अ ट्रांसफ़र स्कीम, राइट? ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन, ट्रांसफ़र पेमेंट है ये, है ना? डिजिटल लिटरेसी फाइनेंशियल इंक्लूजन का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दैट विल इंक्लूड मोर ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक इंश्योरेंस एंड पेंशंस अगेन. तो ऑटोमेटेड पे मॉड्यूल मीन्स सीमलेस डिस्पर्सल. तो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो चीफ है मिस्टर रजनीश कुमार, ही इनॉग्रेटेड पद्मा पोर्टल. पद्मा पोर्टल का फुल फॉर्म है पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस. 15,000 IGC पर्सनल के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली सेंट्रलाइज्ड पेमेंट के थ्रू जितने भी पे एंड अलाउंसेस है वो डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएंगे थ्रू द पद्मा पोर्टल यूजिंग द टूल्स लाइक नेफ्ट एंड RTGS दैट आर सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम्स कंट्रोल्ड बाय द RBI. ओके, which of the following statements are not true about PACs? PACs यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, यू ऑल नो, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आती हैं. फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, राइट? इसी तरह प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होती है. तो व्हाट आर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़? They are outside the purview of Banking and Regulations Act and they are not regulated by the RBI. Okay, they are not regulated by the RBI. They are outside the purview of Banking and Regulation Act. Is that true or not? Okay, there are three statements. They are a self-help group, right? They are the lowest unit in the three-star structure of the cooperative credit banks. So cooperative banks, Mohit, actually no, A is not the right answer. Okay, cooperative credit bank के 3-star tier structure होता है. There are state cooperative credit bank, there are urban cooperative credit bank and then there are rural cooperative credit bank. So yes, rural cooperative banks में primary agriculture credit societies include होती हैं, right? They are a self-help group of farmers. Which of the following statements are not true? Okay, so to A, yes Mohit, actually you are right. You are right. A is actually the correct answer. They are not a type of self-help group. They are not a type of self-help group, but they are the lowest unit. They are the lowest unit of the 3-star structure of the cooperative banking structure. राइट, बट जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स RBI के एम्बिट में आते हैं बिकॉज दे आर मैनेज्ड एंड रेगुलेटेड नॉट ओनली बाय द स्टेट गवर्नमेंट बट बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट के एम्बिट में आता है. प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, दे आर आउटसाइड द परव्यू. दे डू नॉट come under the Banking Regulations Act and they are not regulated by the RBI. Primary agriculture credit societies are not regulated by the RBI. अब ये factual question था,
न्यूज़ क्या थी कि अभी कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स राइट नाउ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू, yes Mohit, actually you were right, A was the correct answer because that is not true. Okay, that was a fault on my end. ओके सो तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अभी डिसाइड किया दैट वेडनेसडे को एटलीस्ट 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज एट द कॉस्ट ऑफ 2516 crores विल बी अप्रूव्ड फॉर प्रपोजल. पैक्स हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया क्या होता है. 13 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को इससे बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, दे विल गेट अराउंड 4 लाख रुपीज टू अपग्रेड इट्स कैपेसिटी एंड इवन ओल्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मिलेंगे, कैपेसिटी इम्प्रूव होगी एंड ऑल्सो इनका क्रेडिट वर्दीनेस जब इम्प्रूव होगा तो दे विल फाइंड इट ईजियर टू एक्सेस लोन्स फ्रॉम द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, तो दिस इज व्हाट दे डू. दे आर एक्चुअली प्राइमरी. You all now know the concept. इसका significance क्या रहेगा? It will increase the transparency, reliability and efficiency. Okay, local languages में इनको training दी जाएगी through a software and it will help become the nodal agency because of digitization, because of जैसे अभी जितनी भी government schemes हैं, common service centers हैं, banking correspondents हैं, all these Indian post payment banks and all these entities are there that ensure that make sure that the benefits of the government schemes they reach to the last mile. They reach to the last mile to every household in rural India. Okay, so basically PACs, they provide services such as DBT, interest subvention schemes. Digitization will help them become more transparent. They will help them become another agent, another source for implementation of key government schemes, especially those related to agriculture. Okay, so this was the significance of this current affairs. So which of the following statements are not true about PACs? We've already discussed about it, I guess. SFL is to invest 400 crores. Okay, so इस पे question क्या बनाऊँ मेरे समझ में नहीं आ रहा था, but important है because Sundaram Fasteners is a giant company. It is one of the top companies. Ancillary industry में ही आता है. Provides auto components to automobile manufacturing units like Maruti, Suzuki, Mahindra. So it is one of the it is a supply chain unit. It is a major supply chain manufacturing unit. Okay, or it has committed an investment of 400 crore in automobile sector alone for the next 2 years, commercial vehicle passengers. So according to SFL, the automobile sector in India has already witnessed a double digit growth. Okay, so that is why it has committed an investment of rupees 400 crore and post double digit growth during 2023. Okay, 300 crore will be invested in fasteners, 100 crore will be invested in manufacture, supply and value added sub-assemblies. You all know about it. Okay, तो पावर ट्रेन component division special economic zone में back contract worth rupees 150 crore. You can actually read about it because there is nothing to tell, but the news is quite important. Why? Because the automobile sector has seen a resurge in investments by various companies. It has seen a revive after the COVID-19 pandemic and even before that when there was a slump in the automobile industry. Okay. Ministry of Tribal Affairs has launched phase 2 of GOAL, that is GOAL version 2 in collaboration with which technology giant. So आपको अगर GOAL 1 के बारे में पता है, that GOAL 1 aimed to digitally empower the tribal youths of our country, उसी का एक extension या फिर second version है scheme का GOAL 2. और ये GOAL 2 कौन से टेक्नोलॉजी जायंट या फिर सोशल मीडिया जायंट के साथ कोलैबोरेट करके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इम्प्लीमेंट कर रहा है. ओके, तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं ऑलरेडी हमारी कंट्री में जो कि इम्प्लीमेंट हो रहे हैं फॉर द डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल इंडिया एंड ट्राइबल रीजन्स. ओके, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का ऑलरेडी एक प्रोग्राम चलता है साथी.
साथ ही एक ऐसा प्रोग्राम है जो रूरल वुमेन फ्रॉम द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, रूरल वुमेन को डिजिटली एम्पावर करता है, फाइनेंशियली ट्रेन करता है टू स्टार्ट अप देयर ओन बिजनेस एंड एंटरप्राइज ऑनलाइन। ओके, उसी की तरह मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जो गोल्ड 2 लॉन्च किया है, इट हैज़ लॉन्च्ड इट इन कोलैबोरेशन विद मेटा, जिसको पहले फेसबुक के नाम से आप सब लोग जानते थे, यूज़ करते थे। नाउ इट इज़ नोन एज मेटा। आई थिंक दिस इज़ व्हाट इट्स लोगो लुक्स लाइक, इन्फिनिटी का सिंबल है, ठीक है। मेटा के साथ अल्फाबेट एंड यू ऑल नो इज द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल LLC, ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन। बट मेटा के साथ कोलैबोरेट करके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने गोल का वर्जन 2 लॉन्च किया है, that aims to goal 1 tribal youth were targeted for digital mentorship. Okay, goal 2 is an upgrade of the same mission, where not only the tribal youth will be targeted for digital mentorship, but 50,000 self-help groups and 10 lakh families associated with TriFit, they will digitally upskill and reconnect them and empower 10 lakh youth and women to open up their own startup and enterprise online and leverage various opportunities using technology। ठीक है, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? बेसिकली मेटा बिजनेस कोच है और फेसबुक लाइव सेशंस हैं। मेटा बिजनेस कोच एंड फेसबुक लाइव सेशन, तो व्हाट्सएप बेस्ड चैट बॉक्स के थ्रू मेंटर किया जाएगा वेरियस लैंग्वेजेस में, अलग अलग लैंग्वेजेस में। आई थिंक 9 to 12 नेशनल लैंग्वेजेस में ट्राइबल यूथ एंड वुमेन को डिजिटली एम्पावर और ट्रेन किया जाएगा कि कैसे वो अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर सकते हैं या फिर कोई स्टार्टअप इनिशिएट कर सकते हैं। फेसबुक लाइव सेशन 9 डिफरेंट लैंग्वेजेस में दिए जाएंगे इन द फील्ड ऑफ एंटी स्कैमिंग एजुकेशन, ऑनलाइन सेफ्टी, मिस इन्फॉर्मेशन को कॉम्बैट करना टू बिकम अ गुड डिजिटल सिटीजन। PYSE FinTech will launch India's first and largest fractionally owned solar power plant in Karnataka. Okay, PYSE FinTech कर्नाटका में सबसे पहला फ्रैक्शनली ओन। फ्रैक्शनल ओनरशिप क्या होती है? फ्रैक्शनल ओनरशिप ये होती है या तो कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, फिर प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। इट इज़ इधर ऑन 50-50 बेसिस, 75-25, 51-49%, यू ऑल नो अबाउट इट। बट फ्रैक्शनल ओनरशिप होती है छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट टिकट्स पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक साथ इन्वेस्ट करते हैं और एक यूनिट सेटअप होता है, जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं। दैट इज़ व्हाट फ्रैक्शन ओनरशिप इज ऑल अबाउट, एज द नेम सजेस्ट एंड एज सिंपल एज दैट। सो टिकट वैल्यू एज साइज एज लो एज 5,000 पर टिकट के हिसाब से एक सबसे बड़ा पावर प्लांट सेटअप किया गया है कर्नाटका में। दैट विल स्टार्ट वर्किंग और इट विल कमीशन इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022 and it is expected to save 65 lakhs of carbon footprint every year for the next 25 years. Hi Sandeep. Hi. So welcome to my session. We are discussing about major and main economic news. Stay tuned daily so that you can ensure that you do not miss out on anything. Okay, 26 crore का पावर प्लांट प्रोजेक्ट है और एवरेज इन्वेस्टर शेयर इज एज लो एज ₹25,000. इट इज सपोर्टेड बाय मोर देन 6,100 रिटेल इन्वेस्टर. तो भादला सोलर पार्क है राजस्थान में, लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड. या तो संदीप, टेल मी, डोंट, इवन इफ यू डोंट नो इट इज ओके, बट टेल मी कि इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कौन से स्टेट में है. फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट में भी काफ़ी सारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स इनिशिएट हुई हैं इन वेरियस स्टेट्स लाइक तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड इवन इन कर्नाटका. अभी रिसेंटली वर्ल्ड का एंड आई गेस इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट हुआ है. If you don't know, then search it and write it in comment box, but do give me an answer. Okay. Global Healthcare has been launched by Bajaj Allianz General Health Insurance. So Global Healthcare क्या होता है? They schedule their medical treatments both domestically and abroad. Bajaj Allianz ने सब, yes, it is in Karnataka.
करेक्ट। तो हाँ, बजाज अलियांस हेल्थ इंश्योरेंस ने सबसे यूनिक इंश्योरेंस प्लान निकाला है विद द नेम ऑफ ग्लोबल हेल्थ केयर। ग्लोबल हेल्थ केयर के मेन फीचर्स क्या हैं संदीप? सी लेट्स अंडरस्टैंड। ग्लोबल हेल्थ केयर के फीचर्स हैं, दे कवर बोथ इमरजेंसी एंड प्लान्ड मेडिकल केयर डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड। ओके, आई थिंक यू आर वेरी अपडेटेड ऑन योर करंट अफेयर्स। आपने सब रिवाइज किया हुआ है पहले से, बिकॉज कर्नाटका एक्चुअली इज द करेक्ट आंसर। तो ग्लोबल हेल्थ केयर दे कवर बोथ इमरजेंसी एंड प्लान्ड मेडिकल केयर। द कवरेज ऑप्शन इसमें 37,50,000 से लेके 3,75,00,000 तक इसका कवरेज रेंज है, इसका इंश्योरेंस स्कीम है। तो 37 लाख से 3.7 करोड़ तक का इसका रेंज है। और इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट यूएसपी ये है कि एनी पर्सन हु इज़ अवेलिंग दिस इंश्योरेंस, एनी पर्सन हु इज़ अवेलिंग दिस इंश्योरेंस they can opt for medical treatments both domestically and abroad। यानी कि हम लोग ज़्यादातर अगर इंश्योरेंस लेते हैं इस कंट्री में, तो फिर वो that is confined to the territorial limits of India। But this insurance scheme, if I have taken global health insurance plan by Bajaj Allianz, I will be able to schedule my insurance। अगर मैं domestically अपना treatment लेना चाहती हूँ तो domestically ले सकती हूँ। अक्रॉस द वर्ल्ड किसी भी कंट्री में मैं अपना ट्रीटमेंट लेना चाह सकती हूँ तो मैं ले सकती हूँ विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेपर वर्क। ओके, सो इम्पीरियल एंड इम्पीरियल प्लस प्लान्स हैं जो कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इंश्योरेंस के लिए अवेलेबल है। डोमेस्टिक इंश्योरेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है दैट इट ऑल्सो कवर्स आयुर्वेदिक, it also covers Ayurvedic and homeopathic hospitalizations, while the international policy will cover dental coverage and preventive health checkup। ठीक है ना? So Star Health and Allied Insurance Company is India's major insurance company that has inked corporate agency agreement with IDFC First Bank for the distribution of its health insurance। It will make health insurance more accessible as with the help of IDFC First Bank customers। ठीक है, तो डिजिटल फर्स्ट स्ट्रैटेजी है। डिजिटल फर्स्ट स्ट्रैटेजी बैंक अश्योरेंस क्या होता है? कमेंट करके बताइए ज़रा, व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय बैंक अश्योरेंस? Do let me know in the comments below। IDFC First Bank has offers customer service through mobile banking and net banking platform in addition to its branches, ATMs and loan centers। Okay, is it a refinance scheme? Who is presently the chairperson of NABARD? You all know Madhavi Puri Buch. She is the first woman chairperson of NABI, first non-IAS chairperson of SEBI, and the youngest person of SEBI ever to become a chairperson at the age of 36। So this is not the correct answer। Shri Siva Subramaniam Ramman is the chairperson of SIDBI। M.R. Kumar is the chairperson of IDBI। Right, Debashish Panda is the chairperson of, I guess, IRDAI। ठीक है, G.R. Chintala is the chairperson of NABARD। G.R. Chintala is the chairperson of NABARD। So here you see through options you have revised the current affairs as well। So why has this question? तो joint liability groups form किए हैं in collaboration with Canara Bank। NABARD has formed 2,510 joint liability groups in the state of Karnataka alone in collaboration with Canara Bank। Okay, and also he on his visit to Karnataka Vikas Gramin Bank, he said that self-help groups, they play a very crucial role in empowering women। Okay, cash free payment and easy transfer partners to offer international payment services। Okay,
सो कैश फ्री पेमेंट ने चाइनीज एंटिटी इजी ट्रांसफर पार्टनर के साथ कोलैबोरेशन किया है दैट विल हेल्प इंडियन स्टूडेंट्स टू पे एनी ऑफ देयर फीस एंड एम्बर्समेंट्स अब्रॉड विदाउट ओपनिंग देयर बैंक अकाउंट इन एनी अदर नेशन। ओके, और ये स्ट्रीमलाइन करता है इंडियाज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के साथ। ओके, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम क्या होता है? लेट अस हैव अ लुक एट इट। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इंडिविजुअल्स कैन फ्रीली remit up means remitting means to transfer their incomes from a foreign country domestically, right? So that scheme, that collaboration will enable Indian students to transfer their income from domestic country to foreign entities to pay their fees and loans to colleges and banks in other countries without needing to open a bank account in a foreign country. Okay. Permissible current or capital account transaction. Under the scheme, the resident individuals can acquire and hold immovable property or shares. ठीक है. Individuals can open and maintain, hold foreign currency account with banks outside India for carrying transactions. So ये liberalized payment scheme है, उसी के अंदर ही partnership हुआ था, and that is why that was important. SBI, HDFC and ICICI Bank acquire 9.4% stake. Total 8,05,520 की इक्विटी शेयर्स को अक्वायर किया है बाय पेइंग 4.03 करोड़ ईच. दे हैव परफ्यूज AA का स्टेक इन तीनों बैंक्स ने अक्वायर किया है. परफ्यूज AA सर्विसेज इज अ नॉन बैंकिंग, नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. GST काउंसिल के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी कल एक सेशन लिया था. अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेशन ऑन GST काउंसिल वाज held yesterday itself. Okay, we have seen, अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो you can watch the session, जिसका लिंक आपको रेगुलेटरी बॉडीज के चैनल पे मिल जाएगा. ओके, इम्पॉर्टेंट स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स. लैंसेट की एक स्टडी आई है. अकॉर्डिंग टू द लैंसेट स्टडी, रोड एक्सीडेंट्स आर द मेजर कॉज, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ फेटलिटीज इन इंडिया. Okay, so the Lancet study is actually based on another report. The Lancet study is actually based on another report with the name of Global Burden of Diseases के ऊपर based है ये. Global Burden of Diseases actually also say that most number of fatalities are in India are basically due to road injuries, जो कि 2007 में data release किया गया था. Okay, you can have a look at the data only. It is a totally data-based report. Main data आपको याद रखना है खाली, जो first slide में use किया था. Hurun India Future Unicorn Index. Hurun India Future Unicorn Index ने, according to which India will have 122 new unicorns for next 2 to 4 years, and these firms currently have a value of $49 billion. तो what are unicorn? What are unicorn? ऐसे startups जिनकी value बहुत कम time में बहुत ज़्यादा exceed कर गई है. They have soared higher than 1 billion in valuation. Based on fundraising के हिसाब से they have become $1 billion startup in their starting stage itself. These startups are known as unicorn. Okay, सबसे ज़्यादा unicorn is obviously in Bengaluru. Okay, and venture capital firms Sequoia Capital have invested in 39 of these unicorns. Okay, Amit Sehrawat has won gold medal in freestyle men's 57 kg category. Bajrang Punia, who won the bronze medal in Tokyo 2020 Olympics, he has also won a bronze. And 5 women have won the gold in freestyle in United Worlds Wrestling Bolat Terlikhanov Cup, जो कि अल्माती कजाकिस्तान में अभी कंडक्ट करवाया गया है. Okay, so this is an important sports news. Important hockey player Mr. Varinder Singh passed away on 29th of July. Okay, ये कुछ important facts हैं उनसे related, आप देख लो. He was conferred with Dhyan Chand Lifetime Achievement Award in 2007.
and he won a gold medal. He won a gold medal at Kuala Lumpur Hockey World Cup, Men's Hockey World Cup. So डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं. लेट्स हैव अ क्विक लुक एट न्यूज़ रिलेटेड टू डिफेंस. लेज़र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स अभी अभी सक्सेसफुली DRDO ने लॉन्च की हैं. It was launched on June 28th with laser anti-tank guided missiles successfully tested by main battle tank Arjun. DRDO ने देहरादून की एक एंटिटी के साथ कोलैबोरेट करके ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च करी है. आर्मर्ड क्रॉप सेंटर एंड स्कूल विल enhance firepower of MTB Arjun. It has been developed by two Pune-based facilities of DRDOs, okay, ARDE and HEMRL, with the Instruments Research and Development Institutes of Rajasthani. High explosive tank hai. It will also increase the capacity, the firepower. It will also enhance the firepower capacity of main battle tank Arjun. एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 इंडियन कोस्ट गार्ड ने कमीशन किया है अभी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज 835 स्क्वाड्रन, जो कि मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट करता है. ओके, एंड इट हैज़ बीन इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स. जल्दी से कमेंट करके बताइए हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स. सोम रिवर से 1965 से लेके अब तक पहली बार दिल्ली में यमुना रिवर में there has been a water shortage and the government of Delhi has been requesting the Haryana government to release water from Som river. Som river कहाँ से flow करती है? It flows through the state of Haryana. वेस्टर्न कनाल में जाके वो यमुना रिवर से मिलती है एंड इसका जो ओरिजिन है इट इज़ ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा. Okay, so this was it for today's current affairs. Thank you so much for watching. Alright, so see you in the next class. Take care and bye bye. I hope this session was useful and insightful to all of you. Alright.